आइडेंटिटी क्राइसिस। पाकिस्तान में आपने हाल ही में यूथ को ये कहते जरूर सुना होगा कि हमारे मुल्क में आइडेंटिटी क्राइसिस है और पाकिस्तान की तारीख, उसके बनने के मकासद, यहाँ तक कि अब टू नेशन थ्योरी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में आज बात करनी है। इनफैक्ट इट्स द रूट ऑफ ऑल ईवल। और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की आइडेंटिटी की। पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान आइडेंटिटी। बहुत से हिस्टोरियंस के नजदीक पाकिस्तान के इस आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह उसकी अनक्लियर और एम्बिग्यूअस हिस्ट्री है और इस तमाम हिस्ट्री को शायद एक वीडियो में समझना बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इसके सिरे को पकड़कर इसे समझा जा सकता है। और पाकिस्तान की तारीख का सिरा है 23 मार्च 1940 लाहौर रेजोल्यूशन, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये वो मौका है जब पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर पाकिस्तान की डिमांड रखी, या नहीं रखी थी, या डिमांड तो रखी थी मगर उसमें पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं था। इन सब बातों को समझना अब हमारे लिए बहुत जरूरी है, मगर ये हमें समझाएगा कौन? सर्च करते हैं। आयशा जलाल, oh yes, of course, कैसे भूल सकता हूँ। Who is a better historian on partition and the history of subcontinent than Professor Jalal? प्रोफेसर जलाल को सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर अथॉरिटी समझा जाता है और आपकी बुक्स द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान एंड द सोल स्पोक्समैन, पार्टीशन और जिन्ना साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव पेश करती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रोफेसर जलाल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें लाहौर रेजोल्यूशन की हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाता है। डियर मैम, hope you are doing well. As we are approaching March 23rd, I would like to interview you on the real history of Pakistan resolution. Please let me know of your availability. Many thanks in advance. Haris. Starting from my first question, आपके ख्याल में पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है? Pakistan resolution was, an attempt by the Muslim League to put forward. The British Viceroy उनसे मांगा था कि मुस्लिम डिमांड क्या है। अगर आप कांग्रेस की डिमांड को नहीं आप मानते तो आपकी डिमांड क्या है। तो फिर the Lahore resolution was an attempt to put forward a Muslim demand, but that entailed squaring the interests of many different kinds of Muslims. I mean, Muslims in the minority provinces, उनका जो perspective था वो काफी different था Muslim majority province. मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस वाले लोग तो चाहते थे कि उनकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी उनकी खुद इख्तियारी जो प्रोविंस सूबाई खुद इख्तियारी थी, उसको वो ज्यादा उसको स्ट्रेंथन करें उसको। but the minority province Muslimans needed the center to offset their minority status. So ये जो contradiction थी, इसको जिन्ना साहब ने और लोगों के साथ मिलकर, जिनमें से जफरुल्लाह खान भी थे, मतलब उनके साथ ये पुट टुगेदर की गई। और उसमें एम्बिग्विटीज भी हैं, यानी कि उसमें कोई वफाक का कुछ मेंशन नहीं है, सेंटर का कुछ मेंशन नहीं है, बट इट डज टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सिंगुलर इन द 4th पैराग्राफ, व्हिच वुड जो अक़लियतें हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डाला गया। So what was it? It was an attempt to envisage the Muslim share in an independent India, or that was based on the idea कि grouping of Muslim provinces, आपको मालूम है कि उसमें बंगाल का जिक्र नहीं था. It was primarily in the first instance the Northwest. So it was the grouping of Punjab, Frontier, Sindh and Baluchistan, which would offset the majority. So it was also an expression of Muslim nationalism based on territory. But I think जिस बात को अहमियत देनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो इसको पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था उसमें रेजोल्यूशन में, ना ही पार्टीशन का कोई जिक्र था. There is some mention of territorial adjustments, but those territorial adjustments were intended to increase, not decrease, the Muslim share. So that said, Mr. Jinnah is after the resolution was passed, after a few days, he said in the press कि इसको Pakistan resolution तो Hindu press, they fathered this word upon us. So Jinnah साहब ने ये बिल्कुल कहा. और जहाँ तक पार्टीशन का सवाल है,
सारे मसला ही पाकिस्तानियों का ये है कि उनको समझ नहीं आती कि पाकिस्तान एंड पार्टीशन डू नॉट एंड कैन नॉट have to be equated. So आप लोगों ने जो आपको मिला है 47 में, आप समझते हैं कि जिन्ना साहब इसी को चाहते थे. The problem with that argument, unfortunately, from a professional historian's point of view, is कि जिन्ना साहब ने 2 दफा इनको रिजेक्ट किया था इसी पाकिस्तान को, और ये भी कहा था कि moth eaten mutilated पाकिस्तान है जो मुझे नहीं चाहिए. So I do think that one needs to understand that Pakistan and partition cannot be equated. And जहाँ तक partition का सवाल था, जिन्ना साहब was against the partition of Punjab and Bengal. And जहाँ तक इंडिया की partition का सवाल है, अगर आप लोग जरा सोच विचार करें तो partition असल में पंजाब और बंगाल की हुई थी. तो ये कहना है कि जिन्ना साहब partition चाहते थे, पाकिस्तान जरूर चाहते थे, मगर पाकिस्तान का क्या शेप था, उसको कंफ्यूज करना उस पाकिस्तान से जो पाकिस्तान बना, ये बहुत बड़ी गलती है. जो आप लोग करें, जो आप लोगों को कौन पूछता है, आप लोग तो जो चाहे सोचें. मगर जहां तक प्रोफेशनल हिस्ट्री का सवाल है, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं. अब लाहौर रेजोल्यूशन को तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, मगर लाहौर रेजोल्यूशन का जो असल ब्रेन है वो है जिन्ना साहब की 22 मार्च की स्पीच, जिसे बहुत से हिस्टोरियंस समवॉट एम्बिगुअस भी कहते हैं. तो प्रोफेसर जलाल से हमें इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और इन सब चीज़ों पे मेरे पास कुछ सवालात हैं आपके लिए जो मैं आगे, चलिए आप पूछिए. जी. लेकिन सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपने की कि मुसलमानों से पूछा गया कि भाई आपकी डिमांड क्या है. तो इससे रिलेटेड एक सवाल है मेरा कि जिन्ना साहब ने भी अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वॉइसरॉय ने कभी उनको बुलाया नहीं था, कभी उनसे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं किया था, और वो सिर्फ गांधी जी से ऐसा करते थे. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्हें पहली दफा वॉइसरॉय ने इनवाइट किया और उनसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स किया. और जिन्ना साहब के बकौल ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग उस वक्त तक एक प्रोमिनेंट पार्टी के तौर पर उभर के सामने आ गई थी. लेकिन अगर फैक्ट्स को देखें तो 37 के इलेक्शन तो मुस्लिम लीग हार गई थी. आपके ख्याल में क्या वाकई 3 सालों में मुस्लिम लीग ने इतना ग्राउंड गेन कर लिया था? नहीं, मगर आप ये भी ना भूलिए कि हार तो गई थी, बहुत बुरी तरह हारी. उसके बाद the chief ministers of Punjab and Bengal, सिकंदर हयात खान और फजल हक, they decided, उनको समझ आ गई कि अगर आप कांग्रेस जीत गई है इतनी अच्छी शानदार तरीके से, तो अब वो ऑल इंडिया में पार लेना चाहेगी और उसी तरह की कानून बनाएगी, उसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो उनको सूट करती है और जो इनको पसंद नहीं थी ये पंजाब एंड बंगाल को, क्योंकि द कांग्रेस वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ये चाहते थे कि अपनी सूबाई खुद मुख्तारी को और मजबूत करें. सो इसलिए इन्होंने लखनऊ में 1937 में जिन्ना साहब के साथ पैक्ट किया था, और वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप हमारा केस वफाक में आप हमारा केस पेश करें, और मगर हमारे सूबों में आप मदाखलत ना करें. सो ये एक एग्रीमेंट हुई थी. तो जब, और दूसरी बात ये है कि सो दैट ऑफसेट समव्हाट द लॉस इशू, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने खुद कहा कि आप रिप्रेजेंट करें. दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों को खुद जरूरत थी कि कांग्रेस की जो डिमांड थी कि हमें आज़ादी इसी वक्त चाहिए, तो वो अनरियलिस्टिक थी. सो इस वजह से उनको एक एक्सक्यूज चाहिए था, प्रीटेक्स्ट चाहिए था, तो उसमें उन्होंने जिन्ना साहब को इस्तेमाल किया. तो और उनको, मतलब इवन दो ही हैड लॉस्ट द इलेक्शंस, उनको इक्वल फुटिंग पे बुलाया गांधी के साथ, और दैट रेज जिन्ना स्टैचर अ ग्रेट डील. मुसलमानों के लिए भी उनकी अहमियत नजर उनको आई, वो भी उनकी तरफ तवज्जो हुए. सो मैं समझती हूँ कि जिन्ना साहब जब वापस आए इंग्लैंड से, तो बहुत महदूद उनकी स्ट्रेंथ थी. पंजाब में तो आपको मालूम है वो पंजाब में आए और कुछ कर नहीं पाए, और पंजाब छोड़ के जाते वक्त कहा कि पंजाब इज अ होपलेस प्लेस, आई विल नेवर कम बैक हियर अगेन. सो द पॉइंट इज कि उसके बाद द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान पंजाब. सो ये बात है. ठीक, आपने जिक्र किया कांग्रेस का कि कांग्रेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहती थी, और जिन्ना साहब की भी स्पीच को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें उन्होंने बहुत से कंसर्न रेज किए हैं कांग्रेस के हवाले से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के हवाले से, स्पेशली इंडियन एक्ट ऑफ 1935 के ऊपर भी.
तो जी आपके ख्याल में कांग्रेस कहाँ फेल हुई मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंस दिलाने में कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कोई किरदार नहीं होगा? आई थिंक कांग्रेस का एटीट्यूड एक एरोगेंट एटीट्यूड था कि हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं और सब पहले आज़ादी मिलेगी उसके बाद अक़लियतों के हकूक़ को हम की तरफ तवज्जो होंगे। जिन्ना साहब की डिमांड थी कि पहले आप अक़लियतों की के हकूक़ को सेटल करें उसके बाद आज़ादी की बात करेंगे। सो ये टसल हमेशा रही है। And I think so I think that was the primary dispute between Jinnah and the Muslim League and Jinnah and the Congress. I don't know whether I've explained that to you. सो एक और पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करें इनकी जिन्ना साहब की स्पीच का, जिसमें उन्होंने ऑटोनोमस नेशनल स्टेट्स का जिक्र किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इन ऑटोनोमस नेशनल स्टेट्स के बीच में इंटरनेशनल पैक्ट्स होंगे। तो इस पॉइंट के मद्देनजर क्या हम ये सोच सकते हैं कि International pacts what are you referring to? तो Autonomous and sovereign, that within, ये जो grouping होगी, उनमें जो provinces होंगे, they will be sovereign and autonomous. He was suggesting this, but he makes it clear कि negotiable है ये सब कुछ। मतलब ये अभी नहीं, बाद में बात होगी। So what was he trying to do? He was trying to attract the Muslim majority provinces to the Muslim League's demand, because provincial autonomy तो मिल गई हुई थी 35 एक्ट में, तो उसको ज्यादा तो जिन्ना साहब ने इस रेजोल्यूशन में उनको खुद मुख्तारी और भी ज्यादा पेश की कि आपको और भी ज्यादा मिलेगी अगर ये ग्रुपिंग हो गई। दैट इज व्हाट ही डिड। सो मैम, आपने जिक्र किया ऑटोनोमस प्रोविंसेस का विद इन अ फेडरेशन ऑफ इंडिया, बट इसी स्पीच का एक पॉइंट है जो ये कहता है कि इट विल लीड मोर टुवर्ड्स नेचुरल गुडविल बाय इंटरनेशनल पैक्ट्स बिटवीन देम। तो क्या उनका So that I've always argued that Jinnah Saab left it an open question. This politics is the art of the possible. It's the negotiable. You negotiate. So he left it an open question. या तो आप confederal arrangement बनाएंगे जिसमें उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात की थी, पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं करते थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो ये दो जो एंटिटीज हैं ये फिर डिसाइड करेंगे कि इनकी ट्रीटी अरेंजमेंट्स एज सॉवरेन स्टेट्स क्या होंगी, या they will come into a different kind of an understanding of the kind that the cabinet mission plan presented, which is a federal arrangement. So ये उन्होंने open choice रखी थी, मगर जो भी solution लेना था वो पहले डिमांड थी कि पाकिस्तान डिमांड, पहले principle of Pakistan must be conceded first, and then the relationship between Pakistan and Hindustan, and not to mention the princely states, will be decided later. So this was what he was trying to do after March 1940. So इसी पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे जिन्ना साहब ने डिफरेंट मुस्लिम होमलैंड्स का भी जिक्र किया है और अपनी स्पीच में आइबेरियन पेनिनसुला, बल्कन पेनिनसुला और इस तरह के रीजन्स का जिक्र किया है जहाँ मल्टीपल स्टेट्स की अरेंजमेंट उस वक्त मौजूद थी। तो क्या इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि जिन्ना साहब मल्टीपल मुस्लिम स्टेट्स के हवाले से भी इंडिकेट कर रहे थे? It's very hard to say कि multiple states की बात कर रहे थे, क्योंकि वो आपको मालूम है कि 43 में तो उसको फिर उन्होंने withdraw करवा दिया था। It was certainly later 46 में तो बिल्कुल ही उन्होंने कह दिया कि it's a single demand for both Bengal and Punjab, the Northwest. So मेरा ख्याल है कि this was more aimed at the Congress rather than trying to create multiple states. मगर let me sort of clarify this to you. क्योंकि जिन्ना साहब जो थे, he wasn't operating in a vacuum, as many people think that he just did everything. He was a wizard and खुद ही उन्होंने बैठ के सब कुछ कर लिया. There was a context. Late 1930s में बेशुमार मुसलमान schemes सर्कुलेट कर रही थी जो इन्विजिज कर रहे थे कि क्या होगा। उसमें से एक जो सबसे मजेदार स्कीम थी वो चौधरी रहमत अली की थी, which envisaged small Muslim sovereign states, not just Pakistan, but little states, Sadikistan, Usmanistan, Farukistan, who would be smaller nations, would be part of the Pakistan Commonwealth, the original Commonwealth of Pakistan in his
vision was all the way from Bengal to the Bosphorus. So uske andar yes, हाँ, उसके अंदर मल्टीपल सॉवरेनिटीज हो सकती थी, मगर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है और जहां तक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का सवाल है, आई डोंट थिंक दैट मिस्टर जिन्ना वाज टॉकिंग नेसेसरली अबाउट मल्टीपल स्टेट्स, इवन दो ही वाज ओपन टू दैट आइडिया. As you can see, when Bengal आखिर वक्त में जब बंगाल के यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट रहने का मसला आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, let them remain united. What's the point of having Bengal without Calcutta? It's like asking a man to live without his heart. It's better that they stay united, and I'm sure they'll be on very good relations with us. मगर कांग्रेस ने अलाउ नहीं किया. कांग्रेस ने कहा कि अगर यूनाइटेड रहना तो फिर इंडिया के अंदर ही रहना, और अगर नहीं रहना तो फिर तुम डिवाइड. So Congress demanded partition. That is the point I've been trying to make, which nobody seems to understand, because you guys are convinced कि जो पाकिस्तान जो मिला है आपको, वही ही जिन्ना साहब चाहते हैं. अब मुझे आप बताइए कि इसकी नालायकी की और क्या solution है? मतलब he wanted much more, but you say no, this is what we wanted. Exactly. That's why he said, I don't need this moth-eaten Pakistan. That's right. That's what, I mean, when it was first presented to him, the territorial boundaries were the same, except that the Rajagopalacharya scheme in 42 was still within India, with a link with India, whereas Pakistan as a completely separate state, as a sovereign state, but Jinnah Sahab always demanded undivided Punjab and Bengal for that Pakistan. How can you ignore that? That is the real partition of India. और कहाँ partition? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है टू नेशन थ्योरी, कि आखिर जिन्ना साहब के जहन में इसका असल विजन क्या था. तो जिन्ना साहब की स्पीच की अगर हम बात करें तो आगे जाकर उन्होंने टू नेशन थ्योरी का भी इसमें जिक्र किया है, जिसको बहुत से स्कॉलर्स ऑन बोथ साइड्स बहुत हैवीली क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कहते हैं कि वो अपना आर्ग्यूमेंट ये पेश करते हैं कि मुसलमान तो इससे पहले भी हिंदुओं के साथ रह रहे थे और आज भी इंडिया में रह रहे हैं. तो आप इसको किस तरह देखती हैं? देखिए, ये तो उन्होंने एक सियासी पंगा लिया था. the reason for that was कि वो चाहते थे कि अक़लियती जो हैसियत हो गई है मुसलमानों की, उसको खत्म किया जाए. Throughout this period, before in the early 40s, even before that, वो चाहते थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के पॉलिटिशियंस जो हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंस पॉलिटिशियंस ये मान जाएं कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, जुदागाना जो आपके इलेक्ट्रेट्स थे, उनको खत्म करते हैं, और उसके बजाय हम मुस्लिम मेजॉरिटीज ढूंढें सूबों में, इन पंजाब, इन बंगाल. दिस वाज द प्राइमरी गोल. तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर वो समझते थे कि सिर्फ अक़लियती हैसियत मुसलमानों की अगर रहेगी तो वो हमेशा परमानेंट माइनॉरिटी रहेंगे. सो by calling Muslims a nation, he was following the international discourse on self-determination of nations at that time. The idea that a nation, in the family of nations, big and small are equal. So he had to get around the numbers game, जहाँ पे Congress, ignoring the internal divisions within the Hindu community, insisted on the Hindus, capital H Hindu, as a majority. And so to offset that, he put forward the two nation, that Muslims were also a nation. They were not a minority, entitled to the same rights. And he also said, as you this resolution ko aap quote speech ko quote kar rahe hain, usme ye bhi kaha tha ki brother Gandhi has 4 votes and I have only 1. Yeah. So I think you have to sort of understand what he was trying to do here. So, to criticize him, but in any event, the point I want to also make to those critics of the two nation theory is that it was a political stance. And then to say कि मुसलमान नेशन नहीं थे मगर हिंदूज नेशन थे, मतलब किस लिहाज से होता है? Nationhood is a subjective feeling. You cannot project it objectively and decide कि ये है हम क्या करें. It was obviously there were weaknesses in that, and those weaknesses played out. There are more Muslims living outside Pakistan today than within, so that's clear.
बहुत से स्कॉलर्स जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं और उनके मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग को लेकर, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इस हवाले से भी प्रोफेसर जलाल से कुछ सवालात करने चाहिए। इसके अलावा आपने इस बात का जिक्र किया कि जिन्ना साहब वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, तो जी बहुत से स्कॉलर्स इस बात का भी जिक्र करते हैं जिन्ना साहब की इस स्पीच को लेकर के ही यूज्ड अ वेरी ओपन एंडेड लूज लैंग्वेज, तो जिससे कोई कुछ जान के, because that is the reason, so that there is room to negotiate. I mean, if you have a very rigid language, then there is no scope to negotiate. And in politics, you have to have some leeway in order to get somewhere. Compromise बहुत जरूरी होती है. So you have to allow a bit of space. सो इसके अलावा आपने इस बात का जिक्र किया कि मुस्लिम लीग 1937 के इलेक्शंस में बहुत बुरी तरह फेल हो गई थी, हार गई थी। तो आपके ख्याल में क्या एक हारी हुई पार्टी का 3 साल बाद ही ऑटोनोमस स्टेट्स की डिमांड रखना वैलिड था? क्या उन्होंने इतना ग्राउंड गेन कर लिया था कि वो ये इतनी बड़ी डिमांड रख सकते थे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि it wasn't even despite the loss, they managed to get Punjab and Bengal, the two main Muslim majority provinces, on board. And सिंध में भी उनकी सपोर्ट थी, हिदायतुल्लाह साहब थे वहां पर और भी लोग थे. सो फ्रंटियर में अलबत्ता उनकी नहीं थी, उधर कांग्रेस की चलती थी. So I do think that it was put forward not just by Mr. Jinnah, and it was a Muslim. You know, the other problem in not understanding what really happened is that, you know, ये भी सोचा जाता है कि ये सब जिन्ना साहब के दिमाग में बात आई थी. आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत से लोग इस एंटरप्राइज में इन्वॉल्व थे. आखिर में लाहौर रेजोल्यूशन जिन्ना साहब ने जब ड्राफ्ट हुई थी, तो he tried to take account of what was out there and come up with the best possible thing. So I think that's very important to realize that this was something that he realized was going to be negotiated along the way. मैम, कुछ स्केप्टिक्स मुस्लिम लीग को भी बहुत ज्यादा हेविली क्रिटिसाइज करते हैं इस बात पे कि अकॉर्डिंग टू देम मुस्लिम लीग में ज्यादातर रिप्रेजेंटेशन जो थी वो फ्यूडल लीडर्स की थी, और कांग्रेस के होते हुए जॉइंट इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया में उनकी दाल नहीं गल सकती थी. दैट्स व्हाई दे केम अप विद दिस आइडिया ऑफ पार्टीशन. तो आप इससे कितना इत्तेफाक करती हैं? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, बिकॉज द मेन यूनियनिस्ट्स, आपके जो मेन फ्यूडल्स थे यूनियनिस्ट, वो तो बैठे हुए थे, दे वांटेड एन अनडिवाइडेड प्रोविंस, but they wanted provincial autonomy and a weak center. So I don't think, I mean, you know, the confusion, I mean, the whole problem with Pakistan is that people don't realize that it was a federal demand. It is the insistence that it was a Muslim communal demand only that has confused matters. I mean, Jinnah Saab ne isko, I mean, it was part and parcel of the debate on the future federation of Pakistan, I mean, of India rather. And within that, India, he concluded both Pakistan and Hindustan. He said that the unitary center British have created will stand dissolved at the time when the British quit India. So this was how he wanted to put it forward. Now, people can criticize, you know, for what they like. I mean, but they have to at least get their facts right and their arguments right. I don't mind people disagreeing. I mean, I don't necessarily agree with what Mr. Jinnah said or did at this stage or that stage, but the question is that you need a coherent argument. I mean, you need to tie up the loose ends. How else are you're supposed to sort of explain things? So basically, the problem with Pakistan, all these critics, is that they cannot differentiate a provincial demand where the Punjabis wanted to have it their way. And, you know, Muhammad Iqbal ka famous khat hai कि you forget about the Muslim minority provinces for now. So Jinnah Saab was not prepared to do that, and because he actually said, "Don't forget the Muslim minority provinces." You know, they sacrificed and they did things. So the issue really was to keep people together. Punjabis would be quite happy they're having their own separate state, and that's what the Cripps mission made possible. There's a difference between a regionally based identity. So the Cripps mission said that a province can decide to opt out of the Indian Dominion. But for that politics to work, Sikandar Hayat and Fazlul Haq had to make sure that जो non-Muslims हैं वो भी on board हों,
क्योंकि सारा प्रोविंस निकालने के लिए वो था। मगर जिन्ना साहब का क्योंकि he wanted to connect the Muslims in the minority provinces with the majority provinces, needed this to be a Muslim demand. तो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें क्या मुश्किल क्या है इस बात, मगर इतने साल हो गए अभी तक समझ नहीं आती। और क्या आप जानते हैं कि बहुत सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी थी जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को बहुत ज्यादा हैवीली क्रिटिसाइज किया और अपोज किया? तो मैम लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, लेकिन बहुत सी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी थी जिन्होंने इसको अपोज किया, जैसे ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एंड They were associated with the Congress. I mean, the Ehrar, Majlis-e-Ehrar were opposed to it. But ये भी कहना बहुत जरूरी है कि जब पार्टीशन का कॉल कांग्रेस ने दे दिया, the Majlis-e-Ehrar, Jamaat-e-Islami, who was also opposed, Maududi Saab ki party, they all changed. They all changed, just they were opposed to the partition of Punjab. And why do you think they did so? Well, I mean, they wanted undivided Punjab. I mean, Muslims had a strong presence in East Punjab as well, and so they didn't want a division of the province along religious lines. That's why. So they wanted to keep the Punjab undivided, and Bengal too. I mean, but in this instance, I'm referring to the Majlis-e-Ehrar and the Jamaat-e-Islami's attitude. Even though they had opposed the Muslim League ideologically, on grounds that it was not quote unquote religious enough. So वक्त की कमी के बायस this would be my last question because I know आपकी और भी commitments and you have to go. So आपके ख्याल में जिन्हा साहब के लाहौर रेजोल्यूशन के एड्रेस के वक्त उनके माइंड में पाकिस्तान का विजन क्या था? The thing is that it was a process. He didn't have a firm idea. He wanted to use the existing Muslim majority provinces and the Muslim numbers there to come to a deal at the All India level, which had two steps. One was कि मैं पहले तो इन Muslim majority provinces के ऊपर अपना Muslim League का झंडा गाड़ूं, उसके बाद इनका पावर लेकर ऑल इंडिया में निगोशिएट करूं मुस्लिम शेयर ऑफ पावर। वो 1/3 चाहते थे एटलीस्ट। दैट वाज अगेन, आई मीन, ही वांटेड इक्विटेबल शेयर ऑफ पावर। नाउ वेदर ही वुड हैव सेटल्ड फॉर लेस देन 1/3, आई एम नॉट श्योर, बट दैट्स व्हाट ही वांटेड. His point was that he was trying to get around the fact that the Muslims, once they left the provincial arenas of Punjab and Bengal, would still be a minority at the all India level. So उधर वो चाहते थे कि वहां पर उनको कुछ substantial power मिले on the basis of undivided Punjab and Bengal. Because if he got that, then because of the Muslim share in the army, the British Indian Army, उनको काफी उनके मतलब उनका मजबूत उनकी डिमांड हो जाती. मगर कांग्रेस तो पहला स्टेप ही नहीं मानी. कांग्रेस ने तो वहीं डिवाइड करा दिया पंजाब और बंगाल. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम. तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है डॉट्स को कनेक्ट करके पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझने का, और मेरा यहाँ मकसद सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव देना था ताकि आप अपनी रिसर्च को इनिशिएट कर सकें. गाइज, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है. मैं लिटरली जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी वीडियोस बनाएं. मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें. साथ ही अगर कोई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका आप चाहते हैं कि हम इंटरव्यू करें तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए. और अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने ताकि हम इस तरह के मज़ीद हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को फ्यूचर में भी एक्सप्लोर कर सकें. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पर आपको एक काउंटर पर्सपेक्टिव मैं दूं तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक पर पहले भी रिकॉर्ड की है जिसमें रीनोन प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब ने अपनी राय से हमें आगाह किया है इसी टॉपिक के ऊपर. सो प्लीज़ उसको आप यहाँ से देख सकते हैं. उसको देखकर भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि वो आपको कैसी लगी. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में.